तो मैम का क्वेश्चन है कि जो अब घर पे है, because the staff is also applicable at your home, so whether family members should be included within this definition. So the act does not exclude. जो घर पे अगर मारपीट होती है महिला लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दैट विल बी डेट डोमेस्टिक वायलेंस से पूरा कानून है महिला ना, एंड देयर विल बी 3 4 4 8 0 4 3, तो ये एक्ट अदर रूल एनी अदर क्वेश्चन. This last point in defining that the sexual harassment is that any kind of non-verbal act. But doesn't it mean to raise because the burden is so large to इसका misuse हो सकता है, what we used to say. तो law is saying कि आपने इतना इतना broad definition लिख दिया. Now what if it may be misused? Now see, सबसे पहले तो ICC जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसका स्ट्रक्चर देखिए आप. उसके स्ट्रक्चर को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि इसके जो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज ना हो. या पहले एज वन चेयरपर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एम्प्लॉइज है उसमें, और एम्प्लॉइज से एम्प्लॉइज इसका मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें एनजीओ पर्सन जो हु इज रिलेटेड टू दिस राइट्स ऑफ वुमेन, ही इज आल्सो देयर. सबसे पहले तो कमिटी कहीं ना कहीं उसको क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करके बताएगी whether it is falling within the strict definition of sexual harassment. This is the first. Second thing, अगर कोई women, if any aggrieved women makes a false complaint, vexatious complaint, उसे पता है ये चीज false है, वो फिर भी कर देती है. वो कोई झूठा आपका, if she gives any false witness, false evidence, कोई फर्जी झूठा, like if she gives any evidence, so that has been made punishable. तो एक्ट ने कहीं ना कहीं जो सर ने बताया कि मिसयूज को भी रोके. There are provisions in that कि अगर किसी महिला ने, if she makes any complaint which is false, which is vexatious, then she will be also subjected to the penalty. Same penalty जो respondent पे. Yes. Yes. like the structure of the act. So how many members will be there, and if there is a condition of the difference of opinion among the members, so how will it be? How it will be? See, देखिए मैंने when I was in MAM, so अभी एक्ट जब मैं ICC को देखता हूँ तो one there is one presiding officer जो वहाँ की senior most female होगी, जैसे आपके यहाँ पे आपके पास. There will be not less than two. Definition जो है वो कहती है not less than 2 members. तो हम at least 3 members रखेंगे, जिसमें 2 female होगी, 1 male. So 4 members हो गए. There is one external member जो NGO से आता है. There are 5 members. So 5 member committee minimum. So this is 5 member committee. अब वो कह रहे हैं कहीं पे split of opinion हो, तो majority will decide. Majority 5 में से 3 लोग जो बोलेंगे, that will be the opinion of the committee. Sir, did you Sometimes I guess the majority is not right, and it's like if this is the case of democracy, you cannot just. ठीक है. In the formation of this committee, any other formalities are to be completed, or simply it can be formed internally by the employer? Ma'am, this committee will be constituted by the employer. उसने कमिटी उसने एक्ट का लिखा कि भाई इस एक्ट में by exercising the power under this act मैं ये कमिटी करूँ. So you can do it very internally, but employer responsibility है कि वो इसे constitution basis पे at least मैम awareness के दिखाए, लगा जाए इसको. At least he must paste the details. This is the ICC. He must display it on his website. So he will constitute it internally. तो वो पूरा internal है. और दूसरी important बात सर ने कहा, what if कि वहां पे इसके अगर कमिटी की कोई फाइंडिंग आई हो वो गलत लगती है मुझे, सर देयर इज अ कमीशन फॉर अपील. So law prevents it. Law will always prevent the misuse of process. Law की ये जिम्मेदारी है, वो अगर कहीं ना कहीं women के rights को protect करना है, so it is also giving us certain provisions कि वो safeguard दे रहा है कि injustice ना हो किसी के साथ. The first thing what it says कि committee generally मैंने कहा odd member committee होगी तो उसकी जो majority का opinion होगा that will be considered as final. Furthermore वहां पे अपील का provision. There is a provision for appeal. आप अपील कर सकते हैं. मैम से बोला था आपके यहाँ सर्विस रूल्स है, who is the appellate authority. अगर यहाँ पे appellate authority नहीं है तो there is one standing order of a government का ऑफिसर होगा, वो will be the appellate authority and he will come to the conclusion क्या है. आप उससे भी ना खुश हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. So sir, that is it. So if you are unhappy with the findings of the committee, then you may reach the honorable high court, you may reach the honorable Supreme. So this is the case. So this is the ICC. It depends on the faith. What I
I mean to say that ICC, the internal committee, it is just a committee of the members, employer or any external. No one is here who is legally responsible to any conclusion or any decision. हाँ तो अब मैंने कहा जब ये लोकल कंप्लेंट कमेटी है सो सर दिस कमिटी हैज बीन कन्फर्ड विद द पावर ऑफ सिविल कोड दैट्स वन इम्पोर्टेंट सो ये कमिटी सर का लीगल नहीं दिखती इसमें लीगल मेंबर्स जो है दे आर नॉट हैविंग स्ट्रिक्ट लीगल बैकग्राउंड बट this committee this has been because it is constituted because of this act because of this law so this will come under this definition of legal committee दूसरा इस कमिटी के पास कहीं ना कहीं सिविल पावर भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स किसी की अटेंडेंस इंश्योर करानी कोई व्यक्ति है वो नहीं आ रहा है इज नॉट अपियरिंग बिफोर द कमिटी क्योंकि जांच करने के लिए क्या किसी ने किसी एनी पेमेंट लेवल एनी चार्ज अगेंस्ट यू तो आपको भी तो बुला के सुनना चाहिए फेयरनेस क्या है शी इज सेइंग समथिंग शी मस्ट बी हर्ड नाउ व्हाट इज योर व्यू यू मस्ट आल्सो बी हर्ड बट यू आर नॉट अपियरिंग बिफोर द कमिटी now the committee can ensure your appearance so it is having power of civil courts और दूसरा कमेटी का नेचर भले इसके लोग लीगल ना दे आर नॉट हैविंग द लीगल बैकग्राउंड बट कोशिश की गई है कि इसमें वो लोग हो जिनके पास लीगल नॉलेज हो दिस कमेटी इज लीगल इन स्ट्रक्चर बट नॉट गवर्नड बाय द पर्सन हु आर हैविंग स्ट्रिक्ट लीगल नॉलेज तो तभी मैंने कहा कि एक्सटेंडेड मेंबर्स इसलिए बुलाए एनजीओ से या लीगल बैकग्राउंड से सो दैट ही कैन इंश्योर द फेयरनेस ही कैन गेट द एग्जैक्ट कमेटी जब जांच करेगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी and then it will look into कि क्या हो सकता है now sir coming ahead और मैं मैडम से डिस्कशन कर रहा था कि मैडम वो लॉ जो ये मानता है तो the law presumes कि आप लॉ मैडम जी आपका कमिटी का प्लान आप आगे जाकर बोलते हैं मेरे को तो लॉ ही नहीं पता आई डोंट नो difference the law presumes that you know the law mistake of law is no excuse स्टेक को क्या हो कि आपको ये बात पता कि नहीं पता ओके चलेगा सर मेरे को नहीं पता था किसी को याद दैट्स ओके बट यू से सर मेरे को नहीं पता लॉ क्या है सो रियली तो यहीं से पार्ट आता है हमारा यहीं से पार्ट आता है दिस संस्था से आप जुड़े किसी लीगल अथॉरिटी का टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि लॉ क्या व्हाट एग्जैक्टली द लॉ सेज ऑन दिस सेक्टर आई मीन मैंने कभी से बिजनेस को कि आप इसे जो मैंने जो हमारा पर्सन होगा this must be gender inclusive. Why is it only delivered to women? While employees are male, female, everyone, we are saying it's gender neutral. हर कोई होगा. And particularly there is male का आधार है. There must be more. Because पहले if we are saying this because just to create awareness in exhaustive manner, वो सबको include है. Can I have the next slide, please? So, what one more important thing it says, preamble की बात की, कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, preamble. Now, after this workshop, there is an entire handbook that has been prepared by the Ministry of Child, Women and Child Development. Okay? महिला कल्याण मंत्री ने मेनका गांधी जी के समय में एक वर्कशॉप बनाया है, पूरा वर्कशॉप का handbook है. So, I will ensure कि ये slides, वो workshop, law, they all must be delivered to you. आपको मेरे से and hopefully आपको मिल जाएगा that will actually the entire idea कि क्या है क्या नहीं है अगर आपको फिर नहीं क्या if everyone is subjected if everyone requires legal assistance legal aid then we are from University of Lucknow campus still in Jankipuram if somebody requires any assistance they can use mobile they can find us there they can find us anywhere now coming ahead of one if we are coming ahead on the slides exactly